The next one is converse of midpoint theorem. Another important topic. Converse of midpoint theorem. Another important topic. First of all, let me write the statement. The line drawn through the midpoint of one side of a triangle. The midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. ये है statement. The line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. Just imagine ABC एक triangle है मान लो. ABC is a triangle. This is vertex A, vertex B, vertex C. First of all, let us understand the statement. The line drawn through the midpoint of one side of a triangle. इस AB का midpoint D है मान लो. इस AB का midpoint D है. यहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, the line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side, मतलब BC के पैरेलल में अगर मैं ड्रॉ करूंगा, यहां से एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करूंगा, किसके पैरेलल में? BC के पैरेलल में, वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा. इसका मतलब है यहां से अगर मैं एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करूंगा लाइक दिस, यहां से D से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ one side of a triangle, the line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisects the third side. ये third side है ना, third side को bisect करेगा ये. इसका मतलब है ये ही जितना होगा EC भी उतनी ही होगा करके प्रूव करना है. So that is a statement. The line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisect the third side. इस third side को वो bisect करेगा. So given triangle ABC in which D is the midpoint of AB, D is the midpoint of AB and DE is parallel to BC. Isn't it? The line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisects the third side. So D is the midpoint of AB and DE is parallel to BC. तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा. So I am supposed to prove
I am supposed to prove what? E is the midpoint of AC. That is, E is the midpoint of AC. That is AE is equal to EC है करके प्रूव करना है. AE और EC इक्वल है करके प्रूव करना है मुझे. Now construction. through point C, यहां से कंस्ट्रक्शन, यहां से थ्रू पॉइंट C ड्रॉ CF पैरेलल टू BD. यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, यहां से थ्रू पॉइंट C ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू BD. BD के पैरेलल में होना चाहिए. which intersects DE produced at F. DE produced at F. इसका मतलब है इसे भी हमने प्रोड्यूस किया है, इस लाइन को भी ऐसा प्रोड्यूस किया है. Isn't it? और यहां से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया लाइक दिस. ये है, इसे भी प्रोड्यूस किया है. So through point C draw CF parallel to BD which meets DE producer at F. Now the proof is, now in quadrilateral BCFD, सिर्फ इसे देखो, इसे आप देखो, BCFD, इस क्वाड्रिलेटरल को BCFD. BC is parallel to DE, ये तो क्वेश्चन में दिया है ना. BC is parallel to DE मतलब ये दोनों पैरेलल है. ये दोनों अगर पैरेलल है, DE BC के पैरेलल में है, तो DF भी तो पैरेलल होगा इसके. If DE is parallel to BC क्वेश्चन में दिया है, इसका मतलब है DF is also parallel to BC, मतलब these two are parallel. That is given. And by construction, this, what is that? CF and BD are parallel. मतलब ये दोनों parallel है, ये दोनों parallel है. If each pair of opposite sides of a quadrilateral is parallel, then there is a parallelogram. वो parallelogram हो गया है. वही बात मैं यहाँ लिखूंगा. In quadrilateral, कौन सा quadrilateral? BCFD. In this quadrilateral, ये वाला BCFD, इस quadrilateral में BC is parallel to DF. That is given. BC is parallel to DF, वो तो क्वेश्चन में दिया है, isn't it? This. And CF is parallel to BD by construction. This is by construction. So BC is parallel to DF, that is given. CF is parallel to BD, that is by construction. So each pair of opposite sides is parallel. So therefore the quadrilateral BCFD is a parallelogram. Therefore BCFD is a parallelogram since each pair of opposite sides is parallel. अगर ये parallelogram होगा तो क्या होगा? Opposite sides equal होंगे
ऑपोजिट सेट्स मतलब क्या है, सी एफ और बी डी इक्वल होगा ना. सो देयरफॉर कैन आई राइट बी डी इज इक्वल टू, देखो ये बी डी इज इक्वल टू सी एफ होगा. बी डी इज इक्वल टू सी एफ. क्या रीजन क्या है, क्योंकि बी सी एफ डी पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम होगा तो ऑपोजिट सेट्स इक्वल होंगे, दैट इज ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. इसे इक्वेशन नंबर 1 करके ट्रीट करो आप. दिस इज इक्वेशन 1. मतलब ये दोनों इक्वल है, दीज टू आर इक्वल, है ना. नाउ अगेन BD is equal to AD. BD is equal to AD because of the reason BD is equal to AD because D midpoint देखो वो तो दिया है ना, D is the midpoint of AB. D is the midpoint of AB, so BD जितना होगा AD भी उतनी होगा. BD is equal to AD, that is D is the midpoint. D is the midpoint of AB. Equation number 2. अब दोनों को कंपेयर करो. फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, इन दोनों से दिस ऑल्सो BD, दिस ऑल्सो BD, ये दोनों सेम है. ये दोनों सेम होगा तो ये दोनों सेम होगा. इफ दीज टू आर सेम देन दीज टू आर सेम, है ना. तो क्या होगा, देयरफॉर AD is equal to CF. AD is equal to CF. This is equation number 3. मैं बाद में इसे यूज करूंगा. Fine. Now continuation is. So finally क्या आया है, AD is equal to CF. AD is equal to this. AD is equal to CF. ये दोनों इक्वल है करके मैंने प्रूव कर दिया. इक्वेशन 3, isn't it? Okay. Now अगर मान लो इस एंगल को अगर मैं एंगल 1 करके ट्रीट करूंगा, ये अगर एंगल 1 है, ये अगर मान लो एंगल 2 है, इस ट्रायंगल में इन दीज टू ट्रायंगल्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. विच एंगल्स? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अगर मान लो ये अगर एंगल 3 है, ये अगर एंगल 4 है, 3 and 4 आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. यहां पे एक फिगर अगर मैं ड्रॉ करूंगा, उसी का सिमिलर फिगर ड्रॉ करूंगा तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस. ऐसा है ना ट्रायंगल, दिस इज ABC ट्रायंगल, ABC. दिस इज मिड पॉइंट D. यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ किया, यहां से पैरेलल लाइक दिस. दिस इज F एंड दिस इज D. इस एंगल को मैंने नाम दिया है 3, एंगल 3. इस एंगल को मैंने नाम दिया है एंगल 4. अब बाकी सभी साइड्स को मैं मिटा दूंगा जो मुझे जरूरत नहीं है. सो जस्ट वाइप दिस. इसे हटा दो, इस पूरा AD को हटा दो, इस CD को भी, एंड दिस. लुक एट दिस. So this AD and this is CF. AD and CF are two lines like this, ऐसा है. And this is a transversal, isn't it? AD and CF are two lines and this is a transversal. So the angle 3 and angle 4 are what? Alternate interior angles. क्योंकि ये दोनों parallel है ना. How could I say ये दोनों parallel है? क्योंकि ये BCFD by construction this is parallel to this. By construction CF is parallel to BD. CF अगर BD के पैरेलल में है तो obviously CF is parallel to AD, isn't it? CF is parallel to BD है, इसका मतलब क्या है? CF is parallel to AB. AB है, इसका मतलब है AD के पैरेलल में. मतलब this is parallel to this. ये दोनों पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है. So 3 and 4 are alternate interior angles. They are equal. So 3 and 4 are equal. So in this triangle and in this triangle, इन दोनों triangles में, so in triangles
कौन से ट्राइंगल्स? ए ई डी, ए ई डी एंड सी ई एफ, सी ई एफ, मतलब इस ट्राइंगल में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, vertically opposite angles. Angle 3 and angle 4 are alternate interangles, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है. सो एंगल 3 और एंगल 4 alternate interangles इक्वल होगा. सो alternate interior angles, they are equal क्योंकि लाइंस पैरेलल है ये दोनों. And AD is equal to CF. We have proved AD is equal to CF. This is from equation number 3. So look at here. Angle side. AAS. Congruent criterion. The two triangles are congruent. Therefore, triangle AED is congruent to triangle CEF by AAS. Angle side congruent criterion. ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट है तब क्या होगा? AE is equal to what? CE. This is corresponding parts of congruent triangles. यही हमें प्रूव करना है. This is to be proved. AE is equal to CE. EC बोलो CE बोलो, मीनिंग सेम ही. AE is equal to EC. वही हमने प्रूव कर दिया.